Good evening and warm welcome to everyone. Two major events happened and unfolded that have helped the market from a macro perspective. In both the cases, bond yields have dropped and a positive sign for which is a positive sign for corporates as well as bank stocks. The market remained calm after the announcement of the budget, but surprisingly, in today's date, we saw a smart rally in the market, and market managed to make a new all-time high. Although Sensex failed to register the same mainly because of underperformance from PSU banks as well as underperformance from private banks as well as from NBFCs, but PSU banks did really well. So broadly, if we see the market, then there are like number of things which actually played out in last 1 month, and as well as after the budget also there are like number of companies which are uh, uh, going to find or going to get support because of this specific announcement from the budget. Also, there are number of sectors which have really did well in today's date. Why they performed well and why other sectors failed to perform. We'll discuss that in our today's webinar. Later on, we will discuss a few stock ideas as well as market outlook. So this particular webinar is now going to focus more and more on the outcome of the budget. So that's the reason, please pay due attention, because this particular budget is something which will decide the next course of action for the market till July, till the next July comes, till the next budget come in the month of July 2024. So please focus on the outcome that has come and how these sectors are going to perform. Over to you, Sumit. Thank you very much, sir. Let me begin a presentation with you. Okay, so the budget analysis, we will be focusing on dividing the, first we will talk what are the key takeaways from the budget, and then we will talk about, we will try to diagnose the entire budget. So if you look at the interim budget 2025, the government focus was on fiscal control. The government was clearly focusing on budget with it to control the fiscal deficit, and targeted central fiscal deficit to GDP was is projected at 5.1% in FY25. However, if you look at or compare it with FY24, it was 5.8%. So the government's clear course is to reach the target of 4.5% for FY26. ये क्या होता है, ये क्या numbers क्या बोलते हैं, क्या समझ में आ रहा है इससे अपने को? If you look that अगर ये गवर्नमेंट का जो क्लियर मैंडेट है कि भाई हमारा जो बॉन्ड्स का है, बॉन्ड को हमको गवर्नमेंट ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है, हमारी कोई क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करनी है, तो इस सब के लिए ये फॉरेनर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को देखते हैं कि आपका फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी क्या डायरेक्शन में जा रहा है. इज द गवर्नमेंट प्रूडेंट इन स्पेंडिंग और नॉट? I just increase the size just a second. Why is it not happening? Okay. So ये इतना important है from a country's point of view, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट अपना कर्व करेगी डेफिसिट और रिड्यूस गवर्नमेंट बोरिंग, तो उससे क्या होगा कि इंडिया की रेटिंग इंप्रूव होने के चांसेस हो जाते हैं. Improve the attractiveness of India's bond to foreign investors ahead of India's inclusion in the global bond indices in June. अब उसके बाद में क्या होगा? Corporate will get access to foreign capital. Corporate जो Indian corporates हैं उनको foreign का पैसा मिलेगा at attractive rates. ये भी एक benefit है. Credit rating upgrade will attract investment in equity markets. Lower bond yields would
tamp down corporate borrowings, increase incentive for company to set up investments. So ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करने के लिए, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम करने के लिए. इसीलिए आपने कल देखा होगा बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गए थे. सो दैट इज ए क्वाइट पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स. एट द सेम टाइम it also shows the responsible action which the government is taking. गवर्नमेंट ने क्लियर फोकस किया है केपेक्स टू अचीव हायर मीडियम टर्म जीडीपी. अगर अपन देखें कि गवर्नमेंट ने जो नंबर प्रोजेक्ट किया है फॉर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ फॉर FY25 विच इज 10.5%, हमको लगता है ये बहुत रियलिस्टिक नंबर है. और इस रियलिस्टिक अजम्पशंस के पीछे जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए हैं वो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 11% और ओवरऑल एक्सपेंडिचर ग्रोथ अराउंड 6%. सो आपका टैक्स रेवेन्यू ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है, एक्सपेंडिचर कम, इसीलिए आपका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा. Government has budgeted a 17% increase in direct capital expenditure to 11 lakh crore rupees and 11% increase in rural welfare schemes, which exclude food subsidy. तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कहां से आ रहा है. बजट बेसिकली क्या है, आपको रेवेन्यू कितना आया या इनकम कितनी है और अपने खर्चा कितना किया, उसके बाद में या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा. तो जो रेवेन्यू की बात करें अगर अपन, जो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है शोन ए शार्प सर्ज with income tax overshooting the budget estimates for FY24 by 13.5%. तो ये हमने देखा इस गवर्नमेंट के अंदर हर बार ये जो टारगेट करते हैं उससे बेटर रेवेन्यूज आते हैं, आउटबीट करते हैं उसको. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने इक्विटी मार्केट की बात करें तो जो एसटीटी है वो रेवेन्यू हैज एक्सीडेड द बजट एस्टिमेट बाय 15.8%. तो ऑब्वियसली एवरीबडी सीज दैट मार्केट इज डूइंग गुड. lot of participation is increasing. As a result, STT भी साथ में बढ़ता जा रहा है. FY25 की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन which include income tax and corporate tax are estimated to rise by 13.1% to rupees 21.99 lakh crore rupees. इसका मतलब है कि आप FY25 में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा वो 13% से ग्रोथ एक्सपेक्टेड है. और इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यूज जो होंगे वो 17% से ग्रो करेंगे विज़ FY24. FY25 का जो रेवेन्यू टारगेट सीम्स अचीवेबल एंड इन लाइन विद नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10.5%. इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट जीडीपी क्या ग्रोथ पे एक्सपेक्ट कर रही है और जो टैक्स एक्सपेक्टेशन है ग्रोथ की, आर दे सिंकिंग और नॉट. ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड वेरिएशन होना चाहिए, नहीं तो नंबर विल लुक अनरियलिस्टिक. हाँ, हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताना चाहेंगे, जो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन है जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया, हमारे हिसाब से वो उसमें काफी अपसाइड पॉसिबल है इन FY24. अब जो कि मैंने अभी रेफर किया था एसटीटी विच इज लिवाइडेड ऑन ट्रेडेड सिक्योरिटीज, वो is estimated to increase by 27.6% to 32,000 crore rupees in FY24. बट यही नंबर FY25 में जो मार्केट जो गवर्नमेंट एस्टिमेट किया है वो 36,000 करोड़ रुपीस किया है. सो गाइज इसका काफी मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं अपन कि गवर्नमेंट को एसटीटी बढ़ना लग रहा है कि उनका रेवेन्यूज बढ़ेगा from 32,000 crore rupees to 36,000 crore rupees. So where the market is heading, we can guess that the government's gross tax revenue is estimated to grow by 11.5% to 38.31 lakh crore rupees in FY25. So रेवेन्यू साइड की मैंने बात करी है कि कहां से आएगा. नंबर रियलिस्टिक लग रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के बाद को देख के, और जो रेवेन्यू ग्रोथ प्रोजेक्शंस गवर्नमेंट ने लिए वो काफी पॉसिबल लग रहे हैं. अनलाइक कि पास्ट में हमने देखा था कि वो कुछ गवर्नमेंट के केसेस में नंबर्स वर लुकिंग अनरियलिस्टिक, बट यहाँ पे हमें वैसा नहीं लग रहा. और जब रेवेन्यू की बात होती है तो उसमें कुछ टैक्स रेवेन्यू होता है, कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है. जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें सम डाउनसाइड पॉसिबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट हैज पेग्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू एट 4 लाख करोड़ रुपीस फॉर FY25, और उसमें से 1.5 लाख करोड़ जो है वो डिविडेंड एंड प्रॉफिट से आएंगे. डिविडेंड के अंदर आरबीआई से जो डिविडेंड आता है वो भी इंक्लूड किया हुआ है,
और 1.2 लाख करोड़ फ्रॉम टेलीकॉम सेक्टर फॉर लाइसेंस फी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस। एक जगह जहां पे गवर्नमेंट जनरली टारगेट मीट नहीं कर पाती है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। वहां पे हमने देखा है कि इस बार FY25 का जो बजट किया है वो 50,000 करोड़ का किया है, विजिविस 30,000 करोड़ रुपीस इन FY24, दैट इज द रिवाइज्ड एस्टिमेट। और 9 मंथ जो निकल गए हैं FY24 के, उसमें ओनली गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ ही रेज कर पाए हैं फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। अब नट शेल में आपको समझाते हैं कि भाई गवर्नमेंट को रेवेन्यू जो आता है 100 रुपए अगर उसके हाथ में है तो 28 रुपए जो वो बोरो करके लेती है, 1 रुपए उसको नॉन डेट कैपिटल रिसीट से मिलता है, 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से मिलता है, 19% इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करता है। तो 100 रुपए में से 19 रुपए इनकम टैक्स से आते हैं, कस्टम्स 4%, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जीएसटी जो है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। नाउ लुकिंग एट द अदर साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ने बजट किया वो 6% इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर किया है, और जो केपेक्स है वो हमारे हिसाब से काफी मॉडेस्ट इंक्रीज इन केपेक्स फॉर कोर सेक्टर्स। Government maintained its focus on capex with a budgeted growth of 17% in FY25 budget estimate. So वो 11 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है केपेक्स में। ये मार्केट को थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा था, बट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जो पहले जो केपेक्स किया है वो काफी हाई रेट पे किया है, एज ए रिजल्ट उसका बेस काफी बढ़ गया है। सो अब ये इंपॉर्टेंट है कि केपेक्स या एक्सपेंडिचर कहाँ होने वाला है। बल्क ऑफ द इंक्रीज हैज बीन एलोकेटेड अंडर लोन्स टू स्टेट्स, न्यू स्कीम्स अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। Capex growth in core sectors of defense, railways and roads were 5.2% year on year. Muted increase in revenue expenditure, government has budgeted 3.2% growth in revenue expenditure. So ये important है, आपका जितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम रहेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा, विच इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। एक अपन ट्रेंड देखें अगर तो FY19 में 3.1 लाख करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर होता था, अब वो 11.1% 11.1 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री। अब रेवेन्यू की बात हो गई, एक्सपेंडिचर की बात हो गई, बट डेफिसिट कितना? गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा वो 5.1% रहेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था, विच इज अराउंड 6.9 लाख करोड़, विच इज लोअर देन 5.8%। उसका मेरिट मैंने बता दिया कैसे कम होगा और इससे क्या फायदे होंगे, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिस्कल डेफिसिट की जो ट्रेजेक्ट्री है, विच इज फॉलिंग डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम 9.2% टू 5.1%, दिस इज वेरी इंप्रेसिव अकॉर्डिंग टू अस। 5.1% इज FY25 का एस्टिमेटेड है, और FY24 का जो एस्टिमेट है वो 5.8% है। इससे जो फायदे हुए होंगे वो यील्ड कर्व में दिख रहे हैं अपने को, बॉन्ड यील्ड्स में। और हमारा मानना है कि जो 10-year बेंचमार्क यील्ड रहेंगे टू बी इन द रेंज ऑफ 6.7 to 7.15% इन FY25। कमिंग टू मार्केट, इक्विटी मार्केट, जो आउटलुक और वैल्यूएशन की बात करते हैं। After 2 consecutive months of gains, the Nifty closed almost flat in January. The mid-cap and small-cap indices continues their winning streak for the third consecutive month and were up by 5 and 7% respectively. The market sentiment remained positive in the run-up to the interim budget, with a decent Q3 FY24 earnings season supported the market mood. अब ये तो हुई कि मार्केट जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है अर्निंग्स के बारे में, बट हमारा क्या प्रोजेक्शन है, क्या अर्निंग्स कैसी ग्रो करेगी निफ्टी 50 कंपनीज की? हमें लगता है कि FY25 में जो अर्निंग्स ग्रो करेगी वो 10.9% के करेगी फॉर निफ्टी 50 स्टॉक्स एंड 12.3% इन FY26। ये काफी अच्छा ग्रोथ रेट माना जाएगा इफ यू लुक एट द ग्लोबल मार्केट्स। इसमें से काफी हद तक प्राइस्ड इन लग रहा है, बिकॉज वैल्यूएशंस देखेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स ट्रेड्स एट 20 times FY25,
EPS and 18 times FY26 EPS. ये एक वैल्यूएशन बैंड चार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेज कि मार्केट कितना ओवर हीटेड है या अंडर वैल्यूड है. इससे अपने को काफी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. नाउ आई हैंड ओवर द presentation to other analysts for their take on the respective sectors. Thank you, Sumit. One of the important sectors which is normally discussed during the budget is the infrastructure. And as Sumit has discussed about CapEx, and a large part is related to this sector. So as you are aware that we have seen some moderation in the CapEx allocation. But we have to note one important thing that last 2 years have been very strong prior to this year. And this is also election year. So even 11.1 lakh crore, there is some change in allocation that we have seen in terms of sector. अगर आप देखेंगे तो मेट्रो प्रोजेक्ट्स है या NHAI है या फिर अमृत स्कीम है जो कि आपको अर्बन इंफ्रा रिलेटेड है. तो यहाँ पर मेट्रो और NHAI और स्मार्ट सिटी मिशन में एलोकेशंस कम हुए हैं या फ्लैटिश हुए हैं. रेलवेज में भी हमने देखा कि फ्लैटिश एलोकेशन हुआ है इन सिंगल डिजिट. लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जहां पर फोकस किया है. लाइक PGCIL में उन्होंने काफी शार्प इंक्रीज किया है स्पेंडिंग का, जो कि लास्ट ईयर फ्लैटिश था. And due to that, if you see, KEC, Kalpatru, L&T would be benefited from this PGCIL allocation, and Amrut, which is the urban, your Atal Mission for Urban Transformation, which is more related to urban infrastructure. तो इसकी वजह से ये कंपनीज को बेनिफिट होगी. एंड अगर आप एक जो बजट का फोकस देखेंगे तो ग्रीन एनर्जी साइड में काफी रहा है. उसकी वजह से आप देखेंगे CBG जो ब्लेंडिंग की बात की है गवर्नमेंट ने. So CBG blending with the CNG, and to start with the 1% that is expected from FY25 onwards. So that is going to be a positive sign for pipe, particularly the companies which are catering to these sectors like Thermex है या फिर Praj है जो कि बायो एनर्जी और compressed biogas पे काफी फोकस है. They provide the technology solution, so they will be benefited. इसके अलावा अगर देखेंगे तो सेमीकंडक्टर एक जो जहां पर काफी गवर्नमेंट का फोकस है, बिकॉज गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो यहाँ पर उसके वजह से जो PLI है उसके लिए इंक्रीज्ड आउटले उन्होंने प्रोवाइड किया इन द बजट. So companies like Keynes would be benefited, Micron, which is not a listed, but that is also going to be benefited from the capex higher allocation towards this. Next slide, please. सो रियल स्टेट की अगर बात करें तो इसमें जो गवर्नमेंट का ज्यादा थ्रस्ट रहता है, इट इज मोर टूवर्ड्स द रूरल हाउसिंग जो है या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग साइड है या मिडिल इनकम ग्रुप है उनके लिए. सो द स्कीम फॉर मिडिल क्लास हु आर लिविंग इन द रेंटेड हाउस और स्लम, तो उनको घर बनाने के लिए गवर्नमेंट हेल्प करेगी. दैट इज so that will be positive for the housing sector as such. Further जो PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ऑन द रूरल साइड, वहां पर भी काफी एलोकेशन इंक्रीज किया है गवर्नमेंट ने. तो उन्होंने जो बात की है करीबन 2 करोड़ नए और हाउसेज बनाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में. 3 करोड़ हमने बनाए, अभी 2 करोड़ और बनाने की बात हो रही है अंडर PMAY ग्रामीण के थ्रू. सो ओवरऑल ये हाउसिंग के लिए पॉजिटिव है. इसमें स्टॉक स्पेसिफिक क्योंकि कंपनीज कोई ज्यादा इसमें फोकस नहीं होती हैं, तो डायरेक्ट रियल एस्टेट कंपनीज पे मेजर बेनिफिट नहीं होगा, बट ओवरऑल हाउसिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव साइन है. सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज मोर टूवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वेयर द गवर्नमेंट will be encouraging states to take up comprehensive development of iconic tourist center. सो जो नए टूरिस्ट सेंटर जो डेवलप करने की बात करें उसकी वजह से हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को काफी फायदा मिलेगा. सो कंपनीज लाइक इंडियन होटल्स और लेमन ट्री, सो दीज विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट. आई वुड नाउ हैंड ओवर द स्लाइड टू माय कलीग Amarjit. Thank you, Pankaj. So in this budget, if we'll talk about the metal and mining sector, तो ये indirectly benefit metal and mining.
Okay. So metal and mining sector में indirectly beneficiary है. So government has announced, freight corridor. So basically in the three segment, energy, minerals and cement corridor, and second is port connectivity corridor, and third is high traffic density corridor to be implemented. So based on that, so basically logistic infrastructure ease हो जाए, अच्छा हो जाएगा, better हो जाएगा, and logistic का कॉस्ट कम हो जाएगा. सो डायरेक्टली इट विल बेनिफिट टू द मेटल एंड माइनिंग कंपनी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अदानी पोर्ट को भी बेनिफिट होगा इससे. सो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, अरुण. थैंक यू अमर. ऑटोस में अगर हम देखें तो थ्रस्ट जो था वो थोड़ा ईवी साइड पर कुछ न्यूज थे. एक तो था जो फेम इंसेंटिव है वो रिड्यूस हुआ है, जो उसका एलोकेशन है वो FY24 में था अराउंड 4,800 करोड़ के आसपास, एंड दैट हैज बीन रिड्यूस टू क्लोज टू 2,670 करोड़. सो वी बिलीव दिस कुड पॉसिबली बी अ बिट नेगेटिव, लार्जली फॉर द टू व्हीलर प्लेयर्स इन द ईवी सेगमेंट. क्योंकि इसमें अगर आपका बजट एलोकेशन कम होता है तो जो इम्पैक्ट है अगर OEMs कस्टमर को पास करेंगे तो उसकी वजह से सेल्स इम्पैक्ट हो सकता है इसके अंदर. इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज भी था ईवीज में, विच विल बी अ मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्ले, जिसमें कि गवर्नमेंट हैव सेड दैट दे विल बी एक्सपैंडिंग द ईवी इकोसिस्टम बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. नो चार्जिंग इन पर बहुत ही क्रिटिकल प्ले है. ईवी को अगर आपको काफी इंप्रूव करना है, ईवी का पेनिट्रेशन इंप्रूव करना है, तो वहां पर चार्जिंग इंफ्रा बहुत जरूरी है. तो गवर्नमेंट ने वहां पर कहा है कि दे विल बी सपोर्टिंग दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो इसके वजह से जो ईवी का अडॉप्शन है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसको थोड़ा माइलेज मिलेगा. लास्टली अगर हम देखें तो केपेक्स में हमने बात की थी, केपेक्स एक्सपेंडिचर जो कि 17% से उन्होंने इंक्रीज किया है ये साल. सो उसके वजह से आपका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है या ट्रक्स की डिमांड है वो इसके वजह से उनको फायदा हो सकता है. तो ऑटोज में ये तीन इम्पैक्ट हम देख रहे हैं बजट का. आई विल ऑल्सो गो थ्रू बिल्डिंग प्रोडक्ट्स नाउ. इसमें एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनका जो पुराना टारगेट था दे विल बी अचीविंग दैट 3 करोड़ होम्स अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना, and now they are targeting for the 2 crore homes over the next 5 years. So ये एक है जो कि बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, जैसे कि आपकी टाइल्स हो गई या सैनिटरी वेयर हो गया, बाथवेयर हो गए, तो वहां पर उनके लिए ये पॉजिटिव है. इसके अलावा आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन साइड पर है वहां पर बजट इंक्रीज हुआ है. अभी 26,000 के ऊपर चला गया है, लास्ट ईयर 22,000 करोड़ के आसपास था. और जो रूरल साइड पर है वहां पे काफी शार्प इंक्रीज हुआ है, 32,000 करोड़ से इंक्रीज होकर 54,000 करोड़ के ऊपर चला गया है अभी. So these things too we believe will support your building products demand going forward. And Pankaj had already talked about कि वहाँ पे जहाँ पे गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है that would be helping certain section of the middle class to buy or build their own homes. तो जैसे नए नए घर बनेंगे वहां पर आपके बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड वहां पर आएगी. सो ये तीन फैक्टर्स हैं जो हमें लग रहा है कि बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में उन्हें फायदा ला सकता है. अगर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल बेसिकली सीमेंट की तरफ देखें तो वहां पर जो हाउसिंग स्कीम्स है जैसे हमने बात की, वहां पर जो टोटल आउटले है वो इंक्रीज हुआ है. हमने पिछले स्लाइड में भी वही बात की थी. तो ये आपका सीमेंट डिमांड के लिए पॉजिटिव है. बिफोर मूविंग जस्ट मैं अगर आपको बताऊं कि सीमेंट बेसिकली कहाँ कंज्यूम होता है, तो आप देखेंगे तो 60 से 65% आपका हाउसिंग में जाता है, जिसमें कि रूरल का शेयर ज्यादा है. इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में जाता है तो अराउंड 25% और 15% सीमेंट यूज होता है आपके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल. सो ये तीन ब्रॉड सेगमेंट्स हैं जहां आपका सीमेंट का कंजम्पशन होता है. तो ये हाउसिंग स्कीम की हम बात करें जो कि सबसे बड़ा मेजर कंज्यूमर है सीमेंट का, तो वहां अगर आपका कैपिटल आउटले इंक्रीज हो रहा है, सो दैट इज पॉजिटिव. सो ये आपके FY24-5 में डिमांड आ सकती है इसके वजह से. इसके अलावा जो हमने बात की है कि गवर्नमेंट की न्यू स्कीम आ रही है फॉर डिजर्विंग सेक्शंस के लिए, तो ऑफ द मिडिल क्लास टू बाय देयर ओन होम्स और बाय और बिल्ड देयर ओन होम्स, तो दैट विल अगेन ड्राइव सीमेंट डिमांड. लास्टली अगर आप NHAI देखें वहां पर भी उन्होंने बजटरी जो एलोकेशन है वो काफी फ्लैटिश रखा है, तो बट दैट शुड स्टिल सस्टेन स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम रोड्स और इंफ्रा सेगमेंट इन FY25. सो सीमेंट के लिए डिमांड पर्सपेक्टिव से आई थिंक दीस थ्री आर द पॉजिटिव पॉइंट्स. ओवर टू Apurvi. Thank you, Arun. So good evening, everyone. So the first sector that I'll be talking about is electric utilities. So the government has announced a few steps. So firstly, they'll be making the free energy available for 1 crore of consumers, which will be like around 300 units per month. So this could lead to savings of almost 15,000 rupees to 18,000 rupees per household. This could be an annual saving for a consumer, but this can lead to a burden for state distribution utilities. But if on the longer run, if we see, this allows for a higher integration of the renewable power.
The next investment that the government is promoting is in the offshore wind capacities, which should aggregate around 1 gigawatt. So this can open up new opportunities in the renewable space, and in this space there are players like Tata Power, JSW Energy, NHPC, and NTPC, which can benefit. But this is again a long-term plan. Next focus is on railway infrastructure with dedicated energy, mineral, and cement corridors. So this investment under the Gati Shakti plan of the government will help address logistic constraint that the companies have been facing in movement of coal. So this should help them improve and make the coal available for them on timely basis. Lastly, there is a higher budget outlay of almost rupees 85,000 crore for transmission sector to integrate this solar power. So this is an improving opportunity for player like Power Grid. Next, please. So on pharma and healthcare front, there's not much that the government has announced, just two points that we would like to highlight. Firstly, that the government plans to set up more medical colleges to utilize the existing hospital infrastructure. We've highlighted a lot of times in our webinars also that in the hospital space, if you see there is a dearth or there is not much of, there's a mismatch of a supply demand for doctors in the country. So this is something that the government may try to address over the next 3 to 5 years of their tenure. And lastly, on the healthcare cover under the Ayushman Bharat scheme, the allocation has been increased by 4.5% for FY25. So this will increase the allocation, but does not suggest any meaningful change in the insurance coverage. So in all, if you have to see, it was a very neutral kind of announcement for this sector. Over to Rini. Thank you, Purvi. In the budget yesterday, fertilizer subsidy को reduce किया to 1.64 lakh crore rupees for FY25, जो 1.88 lakh crore था in FY24. In particular, जो non-यूरिया fertilizers है, उस पे subsidy cut की गई from 60,300 for FY24 to 45,000 in FY25. So ये एक concern हो सकता है for shares for fertilizer shares of fertilizer companies. Then, however, on the other hand, programs for development of agri-related sectors, जैसे कि fisheries है, dairy है, food processing है, could be positive for companies operating in related segments. For example, 5 integrated aqua parks will be set up, and investment for Blue Revolution has been upped from 2,000 crores in 2024 to 2,350 crores in 2025. So, हमें लगता है Godrej Agrovet could potentially be a beneficiary of this. That's it from my side. Over to Amarjeet. Thank you, Rini. So we are starting investment ideas. Though our first investment idea is Zomato. अगर हम Zomato को देखें तो Zomato ने काफी अच्छा Zomato को देखें तो Zomato ने काफी अच्छा मार्केट शेयर गेन किया है या बोले मेंटेन किया है in the terms of gross merchandise value. So 4% against Swiggy's 46%. There are two players in the market, especially in the food delivery, Zomato and Swiggy. If we see the presence, अगर देखें across the India, 750 cities में Zomato है, और compare करें तो Swiggy 600 cities में. So काफी अच्छा numbers हैं. Apart from that, Zomato is betting on the Blinkit. We are expecting कि Blinkit के अंदर काफी अच्छा value है. Going ahead, वो अच्छा एक value create कर सकता है Zomato के लिए, overall stock के लिए. Apart from because Zomato, Blinkit is improving the store level unit economy. So over the period of time, we see some improvement, some improvement the Blinkit, and we are expecting 28% revenue CAGR over 24 to 30, and steady profitability improvement in the Blinkit. And apart from that, if you will see consolidated Zomato numbers, so we are expecting 39% CAGR over 23 to 26 in Zomato. And we are expecting the EBITDA losses will reduce gradually due to the improvement in the economy, unit economy, and also we are expecting कि break even आ जाएगा 2025 में.
एबिटा लेवल पे जोमेटो में। एंड ओवरऑल एसओटीवी में देखे तो 160 का फेयर वैल्यू है स्टॉक का, एंड वी हैव अ बाय रेटिंग ऑन दैट। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, अमित। Thank you, Amarjit. Adani Port is our pick for the month and post interim budget, and also post its Q3 earnings with a buy rating and a target price of 1400. Q3 में अदानी पोर्ट ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट किए विद 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑन की पोर्ट एंड ओवरऑल पोर्ट मेट्रिक्स एंड ऑल्सो 60% ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट। अगर आप पहले 9 महीने का वॉल्यूम ग्रोथ देखें तो 24% था और काफी ब्रॉड बेस्ड था अक्रॉस की कार्गो कैटेगरीज, और इक्वल कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम मुंद्रा, डॉन मुंद्रा एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक ग्रोथ। अदानी पोर्ट ने अभी तक कोई मीनिंगफुल इम्पैक्ट ऑफ रेड सी क्राइसिस भी नहीं देखा है और बिलीव करता है कि ये उनको मीनिंगफुली इम्पैक्ट नहीं करेगा। अदानी पोर्ट ने ये भी किया है कि इसका नेटवर्क है स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग इन हायर कोस्टल शिपिंग वॉल्यूम, जिसने कंट्रीब्यूट किया है 4% ग्रोथ इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY24। हमें उस ग्रुप का इम्प्रूविंग फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा लगता है, एंड वी आर रिकमेंडिंग बाय विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1400 यूजिंग DCF methodology and assumption of 6% terminal growth and 11% weighted average cost of capital. Higher growth, we are expecting higher growth in medium term, and it also implies 15x March 26 EV EBITDA. Interim budget में अनाउंस किए थे 3 economic railway corridor programs which includes energy, mineral and cement and port connectivity corridor and high traffic density corridor. We believe this entire corridor program of railways to benefit Adani Port in the long run. That's it from my side. Over to Arun. Thank you. Previous slide. Thank you, Amit. We talked about building material space, जहाँ पे हमने कुछ announcements बताए थे जो कि सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। वहां पर हमें टाइल्स में कजारा सिरेमिक्स पे हमारी एड रेटिंग है और फेयर वैल्यू हमारी 1500 रुपीज है। कंपनी का रिजल्ट्स भी अभी हाल ही में आया हुआ है। ओवरऑल आप देखेंगे तो FY24 में थोड़ा डिमांड साइड पे थोड़ा स्लो डाउन रहा है, बट कंपनी ने मेंटेन की है FY25 के लिए एक पॉजिटिव आउटलुक। और कंपनी एक और चीज एक्सपेक्ट कर रही है कि उनका ये है कि कहना है कि whatever industry growth happens, they'll be growing or outperforming the industry growth by around 5 to 6%. For example, अगर industry 10% grow होता है तो they are looking to grow by say 15-16%. If industry grow by 5%, they are looking to grow by 10-11%. Similarly, so they're looking to outperform industry growth, which would mean market share gains for them going forward. अगर आप उनके EBITDA मार्जिन्स देखें तो 9 मंथ में जो FY24 के जो 9 मंथ्स हुए हैं उनके EBITDA मार्जिन्स इंप्रूव हुई है एज कम्पेयर टू FY23। उसका मेन रीजन ये रहा है कि गैस प्राइसेस कम हो गए हैं। लास्ट ईयर गैस प्राइसेस बहुत ऊपर थे और उसके मुकाबले गैस प्राइसेस ये साल नीचे हैं, इसकी वजह से उन्हें काफी फायदा हुआ है और EBITDA मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखा। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर थिंग व्हाट द कंपनी हैज आल्सो सेड कि उनका जो ये साल का जो EBITDA मार्जिन का जो गाइडेंस रहा था वो 14 से 16% था। उन्होंने नेक्स्ट ईयर के लिए 15 to 17% गाइड किया है, which shows confidence from the management part that the margins can improve from here on. We believe this would be largely from premiumization. उन्होंने अभी रिसेंटली न्यू कुछ 2 फैसिलिटीज है जो उन्होंने अपग्रेड की है, तो उसका भी कुछ उन्हें फायदा होगा। सो ये कुछ मेजर्स है जिनकी वजह से उनकी EBITDA मार्जिन आगे इंप्रूव हो सकती है। अगर आप बैलेंस शीट साइड पर जाएंगे तो वहां पर कंपनी डेट फ्री है, नेट कैश है बुक्स के अंदर, और उनकी कैश फ्लो जनरेशन भी हेल्दी रहे हैं और फ्री कैश फ्लोज हम लोग एक्सपेक्ट करें कि वो जनरेट करेंगे दिस ईयर इवन नेक्स्ट 2 years के लिए। सो ओवरऑल बैलेंस शीट भी हेल्दी है। अर्निंग्स ग्रोथ भी आप देखेंगे तो हमारे एस्टिमेट्स अराउंड 21% 25 के लिए FY25 के लिए, 24% FY26 के लिए। हमने स्टॉक को पी पर वैल्यू किया है प्राइस टू अर्निंग्स पर अराउंड 36 टाइम्स दे करके। सो कजारे पे हमारा ऐड है, फेयर वैल्यू 1500 है। स्टॉक्स में करेक्शंस आते हैं तो आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू पंकज। Thank you, Arun. There's another stock which is into building materials where we are positive, and there's also a positive cues from the budget as well. So Supreme पे हमारा ad recommendation है, and we have a fair value of 4640. ये कंपनी हमने पहले भी recommend किया and we are very much positive on the stock.
अगर पाइपिंग इंडस्ट्री, अगर प्लास्टिक पाइपिंग की बात करें तो दिस इज द लार्जेस्ट प्लेयर एंड इट हैज डन वेल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एज वेल. सो अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो करीबन 14.5% से इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ किया था. एंड अगर आप फुल ईयर के गाइडेंस की बात करें तो कंपनी इज टॉकिंग अबाउट 30% ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ इन द प्लास्टिक पाइपिंग बिजनेस. That's true for a player which is the largest player in the industry. So it shows कि कितना पोटेंशियल है कंपनी में in terms of growth. उसके अलावा अगर डिमांड आउटलुक जो है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान एंड रियल स्टेट सेक्टर है जो कि काफी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आ रहे हैं, वहां से भी एक पॉजिटिव क्यू है. तो कंपनी आने वाले साल में 15% का वॉल्यूम CAGR एक्सपेक्ट कर रही है एंड मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, 15 से 16% रहेंगे. रिसेंटली अगर लास्ट क्वार्टर की रिजल्ट की बात करेंगे तो थोड़ा सा जो वॉल्यूम में 15% का ग्रोथ है, दैट्स टू ऑन अ हाई बेस, सो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा वो कम दिखता है. अदरवाइज फॉर द फुल ईयर 30% वॉल्यूम ग्रोथ इन द पाइपिंग बिजनेस दे आर टॉकिंग अबाउट. एंड ओवरऑल ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम 23% वॉल्यूम ग्रोथ बिकॉज दे आर ऑल्सो इनटू chairs, plastic chairs, and then the packaging material and industrial products. लास्ट क्वार्टर में करीबन 6% का रेवेन्यू ग्रोथ था बिकॉज तो रॉ मटेरियल प्राइसेस वो करेक्ट हुए, इसकी वजह से रेवेन्यू में थोड़ा मॉडरेशन आया है. बट प्रॉफिट्स में इफ यू लुक एट EBITDA हैज ग्रोन एट 29% एंड PAT हैज ग्रोन एट 22%. तो ओवरऑल हमारा एक पॉजिटिव व्यू है कंपनी पे. वी रिमेन कंस्ट्रक्टिव ऑन द स्टॉक and we have ad rating and we have a fair value of 4640. We have valued at 37 times on FY26 earnings, जो कि अगर इसके जो पीयर ग्रुप कंपनीज लाइक कैस्ट्रॉल विच इज ट्रेडिंग एट मोर देन 60 टाइम्स, तो काफी डिस्काउंट पे है उससे. तो ऑन सुप्रीम वी आर रिकमेंडिंग एज विद एड एंड फेयर वैल्यू 4640. ओवर टू पूर्वी. थैंक यू पंकज. सो फार्मा सेक्टर से जो स्टॉक हमने चुना है इस बार वो है ब्लूजेट हेल्थ केयर, जिसका IPO हाल ही में ही आया था. सो हमारी फेयर वैल्यू इस स्टॉक के लिए है 410 रुपीज और रेटिंग है एड. तो ब्लूजेट अगर हम देखें तो CDMO स्पेस में है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है. और इनका बिजनेस मिक्स है और कॉन्ट्रास्ट मीडिया से 70% रेवेन्यूज आते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से 20% एंड फार्मा इंटरमीडिएट से 8 to 10%. अगर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, अगर हम लेट मी जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज इट. तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में क्या होता है कि एक केमिकल होता है जो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई वेयर देर इज अ प्रॉब्लम इन द बॉडी इन टर्म्स ऑफ इफ देर इज अ ट्यूमर और अ इन्फेक्शन और अ ब्लड क्लॉट, इंटरनल इंजरीज है या ब्लीडिंग है, फिर डिजीज सच एज कैंसर है या फिर हार्ट का कोई डिजीज है, लंग के या लिवर में कुछ मासेस है. ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए ये डायग्नोस्टिक्स में यूज किया जाता है, जैसे कि MRI या CT स्कैन है इन सब में. सो दिस इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया विच विल बी अ मेन बिजनेस फॉर द कंपनी गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, एंड वी एक्सपेक्ट स्केल अप इन फार्मा इंटरमीडिएट्स टू बी क्रिटिकल. सो 70% ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया बिजनेस जो हम अभी जहां से रेवेन्यूज आ रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 साल में ये 60% हो जाएगा. लेकिन फार्मा इंटरमीडिएट्स जो अभी फिलहाल 10% पे है, this should increase to 20%. So both these areas will drive the growth for the company. The other positive it is that the company has no debt, so it's a debt-free balance sheet, and their internal accruals will be used for supporting the capex going ahead. So हमारी expectation है in terms of revenues and EPS, we are expecting कि over the next 3 years, company will report a CAGR of 23% for sales, which will be driven by volume and new launches. And earnings जो है वो grow करेगी 20% से. So we are initiating an ad with a fair value of 410 rupees on some of the part pieces. Over to Rini. Thank you. So our next pick from chemical space is SRF. SRF is a top pick from chemical sector. SRF का एक ब्रीफ बताऊं तो SRF एक मल्टी बिजनेस केमिकल्स कंपनी है ऑपरेटिंग इन 3 businesses. केमिकल्स बिजनेस जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स और फ्लोरोकेमिकल्स आता है. सेकंड है पैकेजिंग फिल्म्स जिसमें पैकेजिंग लेयर्स होता है फॉर स्नैक्स एंड फूड आइटम्स. थर्ड है टेक्निकल टेक्सटाइल्स बिजनेस जो टायर, कॉट फैब्रिक्स, बेल्टिंग फैब्रिक्स जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. सो SRF का थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेडली वीक. Basically, the earnings disappointment versus last quarter's management outlook has concerned investors. But specialty chemicals ने better perform किया quarter on quarter.
और मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है of a significantly improved fourth quarter. So we continue to see the current downturn as an opportunity to add the stock for longer term. We have a buy rating on the stock currently with a target price of 2660. Over to Somin. Thank you very much. In IT space, we like Cyient with a fair value of 2,400 rupees, and we're recommending buy on the stock. Cyient it's not an IT service company, it's more of an IT engineering company. उसका फोकस जो है वो एम्बेडेड डिजिटल इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज पे है और लार्ज डील और वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन करने से उसको काफी हेल्प मिल रही है डबल डिजिट ग्रोथ के लिए. सो राइट कंपनी के मैनेजमेंट का फोकस बहुत क्लियर है, उनको मालूम है उनको क्या करना है और कहाँ पे ग्रोथ है उसी वर्टिकल्स में और उधर ही फोकस करें. इसके लिए उनको काफी बड़ी बड़ी डील्स मिल रही है. सो जैसा क्या कहा जाता है ना, इफ यू आर एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस यू आर द किंग. सो दैट इज हैपनिंग विद Cyient. हमें लगता है कि कंपनी कैन ग्रो डबल डिजिट रेवेन्यू इन FY25 which is like 10.5% in constant currency terms on a year-on-year basis. वैल्यूएशन हमें रीजनेबल लगते हैं और सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू अदर ER&D प्लेयर्स. ER&D प्लेयर का मतलब होता है इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लेयर्स. इनके कंपिटिटर्स में बात करें तो LTTS हो गया, टाटा एलेक्सी हो गया, और हेल्दी ग्रोथ इन ऑर्डर टेक. ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि ये बताता है कि फ्यूचर की ग्रोथ कैसे आने वाली है, आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी इंप्रूव करती है. तो Q3 के अंदर जो ऑर्डर इनटेक है विच हैज ग्रोन बाय ऑलमोस्ट 22% ईयर ऑन ईयर. कंपनी रिटेन इट्स मीडियम टर्म एस्पिरेशन ऑफ 10 to 20% एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ. इस कंपनी को हमने SOTP बेस्ड वैल्यूएशन पे किया है और हमारा फेयर वैल्यू 2,400 रुपीज आता है. सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है. आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसको स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. नाउ वी ओपन द फ्लोर फॉर Q&A. ओवर टू रेनी. Thank you. So that was our take on the budget announced yesterday, along with some stock ideas. We will now open the floor for Q&A. Use this opportunity to drop your questions in the chat box below. Let me start with the first question that we have. So one of the participants is asking what is the holding period of shares. So as mentioned in all the slides, holding period is for 12 months. Then next question is from Akash Lenka. He is asking what is your view on JMR Infra. Pankaj sir can answer this question. Yeah, sure. So as we have seen today, we have released a report on GMR Infra after the results. So results was good, in fact, on the operating metrics. So company has reported a decent growth of 26% in revenue and EBITDA. But if you look at the balance sheet, there we have seen it has stressed as they continue to add projects और जो airports, जो नए airports पे expansion की काम चल रही है, like गोवा है या फिर they are looking for more projects. तो उसकी वजह से बैलेंस शीट थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है एंड दे हैव मोर देन 25,000 crore ऑफ डेट. एंड ऑफ लेट अगर आप स्टॉक देखेंगे तो काफी एक शार्प रन अप आया है. तो वैल्यूएशन उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो गया. सो अभी हम लोग के हिसाब से स्टॉक पे को सेल करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एंड वी हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 62 रुपीज. Thank you. Next question is from banking space for Amarjeet. Amarjeet, one of the participants is asking which bank stock is good to buy. Can you please suggest? Okay, so basically we got a couple of questions HDFC के ऊपर and PNB के ऊपर. So I'll say that कि अभी HDFC का इस क्वार्टर में नंबर्स थोड़े अच्छे नहीं थे अर्निंग फ्रंट पे because of the weak operating profit growth. However, we see the loan growth ओके था, 5% का ग्रोथ था और डिपॉजिट भी वीक थे ओवरऑल. सो इसके लिए स्टॉक में इम्पैक्ट दिख रहा है HDFC के कहीं ना कहीं. बट हमें लग रहा है कि HDFC एक बहुत बड़ा बैंक है और कहीं ना कहीं ये आउट परफॉर्म करेगा आगे जाके. और वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका बॉटम आउट हो चुका है विच इज अराउंड 3.4%. आगे जाके वो नेक्स्ट ड्राइवर रहेगा कंपनी मतलब HDFC को चलने के लिए. और कंपनी का जो लोन ग्रोथ भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेटर कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री प्लेयर बिकॉज ऑफ साइज.
और कंपनी का आरओई भी डिसेंट है, 16% है। और अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ था कि एलआईसी भी अपना स्टेक बढ़ा सकती है, जिसको मिल गया है उसको अप्रूवल। सो ऑल दीज आर द पॉजिटिव। अगर अभी करेक्शन पे स्टॉक लेगे तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। और एचडीएफसी में तो कोई डाउट ही नहीं है, बैंक में जिस तरह का बैंक है। और अपार्ट फ्रॉम द पीएनबीएफसी के लिए हमारा रिड्यूस रेटिंग है। हाउएवर नंबर्स अच्छे आए थे कंपनी के, अर्निंग्स अच्छे थे, और मेनली ड्रिवन बाय द प्रॉफिट ग्रोथ एंड डिक्लाइन 40% प्रोविजन। और एसेट क्वालिटी भी अच्छा खासा इंप्रूव कर रहा है, ग्रोथ भी, लोन ग्रोथ भी अच्छा था, नीम भी इस क्वार्टर में इसका इंप्रूव हुआ है कहीं ना कहीं। बट हाउएवर अब वैल्यूएशन को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अभी एज ऑफ नाउ उसका फेयर वैल्यू 100 रुपीज होना चाहिए, इसलिए हमारा रिड्यूस टारगेट है। और अगर हम देखें तो कौन से स्टॉक पिक कर सकते हैं, तो काफी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि प्राइवेट में एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक और इंडसइंड बैंक देख सकते हैं, बाय करने के लिए हमारा काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है वहाँ पे। और पीएसयू में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हाउएवर इसका रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा लगता है। Thank you. Next question. So due to time constraint, I'm going to take one last question. Pankaj sir, there are a few queries on Praj Industries. So if you could give your view on that along with IRB infra as well. So Praj, if you look at the company has reported its results yesterday, and results broadly, if you see on the top line, it missed our estimates, but on the bottom line margin front, if you talk about, वहाँ पर सरप्राइज आया है। इसका एक वजह था कि मिक्स जो है प्रोजेक्ट का वो फेवरेबल था टुवर्ड्स हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स। और अगर आपने एक और एक दिन 2 महीने पहले जो शुगर सेक्टर पे न्यूज आया था कि शुगर सिरप से इथेनॉल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने अभी बैन किया है, एंड दे आर एनकरेजिंग मोर सी हैवी मोलासेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग इथेनॉल। तो उसके वजह से थोड़ा वो कैपेक्स स्लो डाउन हुआ है। जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो कंपनी के ऑर्डर बुक में है वहां पर स्लो डाउन हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन। लेकिन जैसा बजट में आपने देखा है कि काफी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने डिस्कस की है सीबीजी साइड में, ब्लेंडिंग टू विद सीएनजी। तो उसके वजह से प्राज एक बड़ा बेनिफिशियरी है। तो स्टॉक जो करेक्शन हुआ है अभी ऑफ लेट, तो ये एक रीजन था क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का जो ब्लेड शुगर सिरप पे जो बैन आया था उसके वजह से। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी का प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है। हमारा एड रेटिंग है, एंड हमारा जो टारगेट प्राइस है 565। हम लोग रिजल्ट अपडेट अभी रिलीज करेंगे, उसमें हम रिव्यू कर सकते हैं। आईआरबी की बात करें तो आईआरबी इज पर भी हमारा बाय ऑन डिक्लाइन एड रेटिंग का व्यू है। ये कंपनी रोड सेक्टर में बीओटी जो कि एसेट ओनरशिप मतलब प्रोजेक्ट ओन करती है, कंसेशन एक लंबे पीरियड के लिए ऑपरेट करती है, वैसा उनका बिजनेस मॉडल है। और इसमें बहुत कम कंपनी अभी जो है इस पे फोकस्ड है, और आईआरबी इज वन ऑफ दैट। लेकिन अगर आप जैसा आपने बजट में भी देखा होगा कि एनएचएआई ने भी कैपेक्स थोड़ा सा रोड सेक्टर में कम किया है, बिकॉज एनएचएआई का जो बैलेंस शीट है स्ट्रेस्ड भी है, एंड गवर्नमेंट का फोकस टुवर्ड्स अदर सेक्टर्स भी है। तो एनएचएआई की अवार्डिंग अभी जो फ्यूचर में होगी मोर ऑफ अ पीपीपी बेसिस पे होगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन बेसिस पे। तो आईआरबी का जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन है मोर देन 44,000 करोड़ है। तो फ्यूचर विजिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। लेकिन एक स्टॉक में काफी बड़ा एक रनअप आया है, उसके वजह से ये स्टॉक हमारे फेयर वैल्यू पे काफी ऊपर है। हमारा फेयर वैल्यू 46 रुपीज है, तो अभी थोड़ा डिक्लाइन का वेट करना चाहिए। Thank you. So with this, we have reached the end of the webinar. So, Shrikant sir, would you like to give any closing remarks before we end? Yeah, of course. Like in this market, especially when there is like a lot of volatility and number of stocks, number of sectors, they are buzzing. Yes, we need to be more and more stock specific in this market. इंडेक्स में अगर आपने देखा होगा तो वी सॉ रैली टुवर्ड्स अगेन 22,150 which was like completely unexpected, a very short span of time, but market did that. Now if we just go through with the other indices, then in that except private banks, almost all the indices did well. Yes, we saw some profit taking on the real estate side. We saw some profit taking on the infrastructure side, or maybe capital goods and engineering companies. But the broader tone of the market is still intact. And we are of the view that in case if there is any correction in the market, then we should look for adding positions.
What happened today, after crossing the important level of 21,850, we saw massive short covering in the market. And because of that, the market reached to the previous high, that was 22,150, on which we were discussing since last few days. Now, what is important is that it should break this level in the coming week. If it breaks to that, then the next level to watch out for would be 22,500. If we just go through with the outcome of the budget, and there was like specific point on which Sumit highlighted very well, that जो क्रेडिट रेटिंग है उसे इम्प्रूव करने के लिए जो बॉन्ड मार्केट में जो एक्शन लिया गया है, I think that is something which is going to help the market in the next few months, because every quarterly all this rating agency, they come out with their rating on the country's debt. So a lot of things they see, and based on that they try to rate the company, right? To rate that particular country. So this is what like now the next trigger which is going to play it out. At the same time, after the end of this particular quarterly results, most of the time we see some correction, but on the basis of the final outcome of the quarterly numbers, we see specific activity in the market. So this time we are of the view that about 22,150, we can expect rally towards 22,500, because then in that case there will not be any resistance for the market. Bank Nifty, which was down heavily, it was around 44,000, 44,500 levels. From there, all the way it recovered back to the levels of 47,000, which is again like something remarkable. And if private banks start supporting in this particular market, and IT companies, because they are also down heavily. Now, if we see this particular run up getting like continue for till the elections or election results, then I think that will help IT companies because then the FIs will or FIs or maybe investors, they will start looking for those options where there is value. Correct. So I am of the view that in this particular correction, if there is any correction in the market, then we should look for adding good companies, strong companies from the IT basket, like Infosys or maybe TCS, where there is upside value. You can, if you just go through with the valuation sheet, you will come to know that which are the companies which have like some upside on the higher side. But at the same time, we cannot forget this private banks, because there also a lot of upside. So broadly, we are of the view that buy on dips should be the strategy. Specifically with the technical point of view, 21,600 is going to act as immediate support for the market. Below that, we can expect some sell-off up to maybe 21,300 or 400. So in that case, we need to be careful. But till the markets are not crossing 22,150, we should look for taking some profit on long positions. And about 22,150, as I mentioned, we should look for adding some maybe options, or even you may look for taking some bets on the large cap companies like maybe State Bank of India, Reliance Industries, where there is still upside. And someone has asked about like if he has to invest, let's say 50,000 in this market. See, like whenever there is like something, if the cash flow is like regular, I mean to say, if you are going to get this 50,000 every month or every quarter, then you can always invest this money into the either secondary market or mutual funds, because then it will be a regular sort of investment system for you. So it is always better to go for SIP route because the markets are highly volatile, and if the investment portion is very small. But if you have only 50,000, then it is better to buy ETF in this market and sit on it for a longer time. I think that can give you better return in the long run, because then the volatility you will save out of volatility in the market. So this is what like how we are seeing the market, and based on its current structure of the market, there are like number of triggers from the global markets, but the important things on which we have to focus is 10-year bond yield as well as dollar index and crude prices. So 10-year bond yield अगर आपने देखा होगा, ये अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है 3.80 तक.
डॉलर इंडेक्स 103 पे स्टडी है, लेकिन वो अगर नीचे अगर आने लगता है 103, 102, 10 में भी 100 के करीब अगर आता है, तो देन दैट विल give some confidence to FIs to invest in Indian markets or maybe emerging markets. And finally, crude, it is still in the range. It is not crossing 90. It is not breaking 70. And maybe that's the reason we are seeing activity and a lot of value buying in all these oil and gas companies. But still, we are of the view that geopolitical tensions are still there. So those things are definitely we need to keep on the radar. But otherwise, be stock specific in this market. Thank you. Thank you. Hope our participants liked the webinar. Just a quick reminder before we wrap. Do follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for regular research updates and stock ideas. Thank you. Have a good evening ahead. Thank you.